अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कैलकुलेशन रिलेटेड टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट योरसेल्फ नंबर 1.7 जो कि है मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, विच इज़ हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ सोडियम and what is the mass of it। मतलब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। इन द फर्स्ट पार्ट you have to find out number of atoms and in second part you have to find out what is the mass of it। when they say what is the mass of it तो मतलब what is the mass of 3 moles of sodium। so चलिए one by one दोनों चीज़ों को find out करते हैं। स्टार्ट करते हैं with number of atoms, लेकिन उससे भी पहले we know that what is given in the question। so given is number of moles of sodium। So there are 3 moles of sodium। Now if we have to calculate number of atoms तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। Number of atoms is equal to number of moles multiply by Avogadro's number। This Na represents Avogadro's number। करना अब हमें बहुत सिंपल ही काम है। We just have to put in the value of number of moles and Avogadro's number। Number of moles तो क्वेश्चन में given है which is 3 mole, और Avogadro's number एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। And value of Avogadro's number is 6.02 into 10 power 23। and if we will multiply these two things we are going to get 18.06 into 10 power 23। but stop here, 18.06, this is not scientific notation। you have to write your answer in scientific notation, and for that purpose this decimal point has to move over here। so to do this we have to increase our value on 10। so your final answer is going to be 1.806 multiplied by 10 power 24 atoms। so ये तो था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ इट, यानी कि मास इन 3 मोल्स। सो उसके लिए हम देखेंगे मास का फॉर्मूला। सो मास ऑफ अ सब्सटेंस is equal to number of moles multiply by molar mass। and what about molar mass? चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सोडियम एटम की, तो सोडियम एटम के लिए उसका एटॉमिक मास ही उसका मोलर मास होगा। सो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम इज 23। सो 23 ही होगा उसका मोलर मास। So if we put the values of number of moles and molar mass, we will get 3 multiplied by 23 which is equal to 69। and since this is the mass of a substance, so we will show the 69 in grams। so we will have our answer 69 grams। so we can say that in 3 moles of sodium 69 grams of sodium is present। So students, let's move to our next question, which is how many atoms are in 1 AMU and 1 gram of hydrogen। मतलब 1 AMU और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स होते हैं। सो हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ एटम्स व्हेन मास इज गिवन एंड मोलर मास इज ऑल्सो गिवन। सो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन and which is going to be its molar mass। so atomic mass of hydrogen is 1 AMU and molar mass is 0.0
1 grams per mole। अब अगर हम देखें अपने फॉर्मूला की तरफ कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, सो इट वुड बी number of atoms is equal to mass over molar mass multiply by Avogadro's number, and simply just put in the values in the given formula. 1 divided by 1 multiply by 6.02 into 10 power 23. So your answer would be 6.02 into 10 power 23 atoms. ये तो हुआ इसका आंसर प्रॉपर कैलकुलेशन के थ्रू, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप सिंपल तरीके से भी कर सकते थे कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ही होता है उसका 1 मोल, एंड 6.02 into 10 raised to power 23 atoms are present in 1 mole. Now let's move to our question number 3. Question number 3 is how many atoms are present in 16 gram of oxygen and 8 grams of sulfur. मतलब इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं, और दूसरा ये है कि 8 ग्राम सल्फर में कितने एटम्स हैं। सो इस क्वेश्चन में भी हम सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया है, बट वी हैव टू यूज दैट फॉर्मूला 2 times. So first let's do it with oxygen. So we know that mass of oxygen is 16 gram, which is given, and molar mass of oxygen is 16 grams per mole. And we have to calculate number of atoms. So the formula for number of atoms is number of atoms would be equal to mass divided by molar mass multiply by Na, matlab Avogadro's number. Now simply put in the values in this formula. Mass is 16, molar mass is also 16, and multiply by Avogadro's number. And we know that your answer would be, and don't forget to mention atoms over here. So ये तो हुए हमारे number of atoms present in 16 grams of oxygen. Since 16 gram mass is equal to its molar mass, so number of atoms would be equal to its Avogadro's number. But let's see how many atoms are present in 8 grams of sulfur. Things are going to remain same. Mass of sulfur given is 8 grams, but molar mass of sulfur is not 8 grams. Molar mass is different. For the first part, molar mass and mass was same. That's why answer was the same as Avogadro's number. But in this case, this thing is going to be changed because molar mass of sulfur is 32 grams per mole. And the formula will remain same. Number of atoms equal to mass divided by molar mass multiply by Avogadro's number. And mass is 8, molar mass is 32, and Avogadro's numbers are 6.02 into 10 power 23. अब सिंपली करना आपको कुछ नहीं है, जस्ट कैलकुलेटर उठाना है and you will solve these values. So we will get our answer which would be equal to 1.505 into 10 power 23 atoms. So कितनी आसानी से हम ये एक फॉर्मूला इस्तेमाल करके number of atoms find कर सकते हैं. And if number of atoms are given but you have to calculate the mass of a substance, you can easily figure out by the same formula. You just have to rearrange positions of the values. Now let's move to our numerical number 4. So question number 4 is the mass of 1 mole of oxygen and 1 mole of sulfur same? So हम देख लेते हैं कि 1 mole of oxygen का mass क्या होता है. So 1 mole of oxygen is equal to 16 grams while 1 mole of sulfur is equal to 32 grams. So क्या 16 और 32 सेम है?
बिल्कुल भी नहीं। सो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मास इज डिफरेंट फ्रॉम 1 मोल ऑफ सल्फर एटम्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज what do you mean by 1 atom of carbon and 1 gram atom of carbon? When we say 1 atom of carbon, so it means single smallest particle of carbon with mass 12 AMU, matlab atomic mass units. Whereas 1 gram atom means 12 grams or 1 mole of carbons having 6.02 into 10 power 23 carbon atoms. So 1 atom of carbon is a different thing, जबकि 1 gram atom is different thing. 1 gram atom term is used in place of 1 mole. यानी कि अगर हम कहें कि 1 gram atom of carbon है तो it would be equal to 1 mole of carbon, जबकि 1 atom मतलब सिंगल एटम, यानी कि सिर्फ एक वर्ड ग्राम ऐड करने से उसकी सारी डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 16 grams of oxygen contains 1 mole of oxygen atoms, calculate the mass of 1 atom of oxygen in grams. यानी कि 16 grams of oxygen में 1 mole of oxygen atoms है, so हमें ये बताना है कि mass of 1 oxygen atom क्या होगा। So उसके लिए फॉर्मूला तो हमें सेम ही इस्तेमाल करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट व्हाट वी हैव इन आवर क्वेश्चन. सो द गिवन थिंग्स इन आवर क्वेश्चन इज mass of oxygen atoms, which is given to us in grams. So mass of oxygen atoms is equal to 16 grams, and we have to calculate mass of 1 atom of oxygen. अब उसके लिए फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ एटम्स is equal to mass divided by molar mass, and never forget molar mass of oxygen is 16 multiply by Na, मतलब एवोगैड्रोस नंबर. अब हमें कैलकुलेट करना है mass of 1 atom, so we will just replace the values. नंबर ऑफ एटम्स की जगह आएगा 1, mass की जगह तो mass ही रहने वाला है. Molar mass is 16 grams and Na meaning 6.02 into 10 power 23. Now we will just rearrange this. So mass of 1 oxygen atom is equal to 1 multiplied by 16 divided by 6.02 into 10 power 23. And if we will simplify this value, we will get our answer, which is 2.66 into 10 power minus 23 grams. जी हाँ, चूंकि हमने एक एटम का mass find किया है तो यूनिट आएगा इसके साथ grams का. Question number 7 is, how many times is 1 mole of oxygen atom heavier than 1 mole of hydrogen atom? इसके लिए we must know what is the mass of 1 mole of oxygen atom and what is the mass of 1 mole of hydrogen atom. So 1 mole of oxygen atoms, their mass is 16 grams, and 1 mole of hydrogen atoms, its mass is 1 gram. So simply हमें रेशियो पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के masses की, so हम कह सकते हैं कि 1 mole of oxygen atoms is 16 times heavier than 1 mole of hydrogen atom. Now we have the last question of our test yourself number 1.7. This question states that why does 10 gram nitrogen gas contain the same number of molecules as 10 gram of carbon monoxide? मतलब 10 gram of nitrogen gas में उतने ही molecules होते हैं जितने 10 grams of carbon monoxide में होते हैं. Now we know that different substances, they can have different number of molecules in different masses or in same masses as well. तो यहाँ हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इन दोनों का mass क्या है. So if we look at the mass of nitrogen gas, तो nitrogen gas का molar mass calculate करते हैं. Its formula is N2. इसका मतलब
14 multiply by 2. This is going to be its molar mass, which is equal to 28. इसी तरह अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, its formula is CO, 1 atom of carbon and 1 atom of oxygen. So इसका mass would be equal to 12 plus 16. And if we will add 12 plus 16, we will get our answer 28. So 28 and 28, their molar masses are equal. So if their molar masses are equal, so it means that the 10 gram of each substance is going to have equal number of molecules. So students, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है अपना टेस्ट योरसेल्फ नंबर 1.7, जो कि था टोटली ही कैलकुलेशंस बेस्ड. सो आई होप कि आपको हमारे फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन अच्छे से समझ आई होगी. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.